Brewing Knowledge Friday एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसी मीटिंग है. It's a time when we just sit down and reflect. And I'm proud of you all because I see that you are reflecting so beautifully. आप लोगों के जो लेख आ रहे हैं वो एक तरीके से एक लर्निंग प्रोग्राम ही बन गए हैं. So thank you. Keep writing. We are so happy to read your reflections in the Joy of Learning diaries and the Happy Teachers blog. Please keep doing that. If nothing else, if you don't get time to read anything in the week, please read the blog posts. On that note, this is Brewing Knowledge Friday, and we are reading Kamla Mukandaya's book. The book is very interesting. It has reached a stage where the discussion has gone on education strategy, what is constructivism, how do you build a culture and life of lifelong learning, and we were looking at what are the learning principles. We even talked of discovery versus long-term learning. समटाइम्स आप और हम इतने इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं कि कुछ सोचने को ही नहीं रह जाता, तो क्या ये सही है कि नहीं. तो ये सब चैलेंजेस हैं जो कमला मुकंदया हमारे साथ शेयर कर रही हैं. एंड वी आर रीडिंग द चैप्टर ऑन लर्निंग, कि लर्निंग कैसे होती है. सो हम इस चैप्टर में थे. वी वर हियर लास्ट टाइम वेयर वी वर टॉकिंग ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग प्रिंसिपल्स, where we were looking at जैसे हम एक्सप्लोरेशन मटेरियल देते हैं, ग्रुप वर्क करते हैं, उसका क्या इफेक्ट होता है लर्निंग पे. यहाँ पे हम थे. अब टीचर्स शायद लुक ऑफ द क्लासरूम को देखती हैं, पर हमें सिर्फ क्लासरूम की लुक से नहीं समझ आएगा, परंतु हम क्लासरूम की बुक कैसे बनाएं, बुक मतलब कहानी कैसे बनाएं, वो देखना आगे बाकी है. Lots of activity, movement, and student participation are not ends in themselves. We teachers have to structure our lessons, sequence the teaching of concepts appropriately, and pose challenging questions. If we are following a well-written textbook, much of this is taken care of. ये scenario है जो आपका existing है. With this strong foundation, hands-on activity and time for student-initiated open discussions are much more beneficial. So we have to complement this with hands-on activity. You have to complement this with open-ended discussions, because वो discussions बहुत crucial होती हैं क्लास के लिए. अगर आपकी किताब चैप्टर वेल स्ट्रक्चर्ड है, वो तो बच्चे अपने आप भी पढ़ सकते हैं. और कई बार जैसे बच्चे बड़े होते हैं, आई सजेस्ट उनको पहले चैप्टर दे दें ताकि वो पढ़ के क्लास में. दैट्स अ टेक्नोलॉजी वी अडॉप्टेड, इट वर्क्स ब्यूटीफुली. अल्टीमेटली द वे वी लुक एट लर्निंग वेल डिटरमिन द वे वी टीच, and even small or gradual changes in our teaching will be beneficial. We now turn to second area of learning, procedural knowledge. Procedural knowledge and skill learning. You would remember that procedural learning refers to knowing how to do things. And almost everything we teach in school requires some degree of procedural learning. How-to skills are needed in mathematics, fine arts, language, science, and so on. And these skills are taught through modeling. That is, the teacher demonstrates the skill by doing, whether it is solving equations, parsing sentences, or writing neatly, and the student repeats the same to the best of ability. So this is how your classroom moves. So let's make notes of this. ये interesting है. It describes the way you do your classroom. So I'm sharing this with you. It says that procedural learning refers to knowing how to do things. And almost everything we teach in school requires some degree of procedural learning. So इसके बारे में आप सोचना, ये मैंने आपको snapshot दे दिया. But procedural learning is not restricted to the operations students carry out in school. It represents a separate and very important mode of learning in the brain, without which our lives would be dysfunctional. Dysfunctional मतलब काम नहीं करेंगी, breakdown हो जाएगा.
Procedural learning is happening all the time, right from day one, as the child learns to turn over, crawl, reach for objects, make meaningful sounds, handle a spoon, tie her shoelaces, ride a bicycle, light a match, cross the road, balance an equation, make chapatis. As adults, we are gaining new procedures when we learn to drive a scooter, type a keyboard, or operate a new machine. What is common in all these situations is that they are learned best by doing, not by following verbal instructions or by watching others perform the actions. Improved with repeated exposure and practice. Implicit or not easily expressible in words. Unlike आप मुगल किंग्स के नाम की लिस्ट बता दें, आप डेट्स बता दें, वो सब आप बता सकते हैं, बट एक्सपीरियंस को आप नैरेट नहीं कर सकते कि आपने रोटी कैसे बनाई. अगर आपको ये लिखना पड़े कि आई लर्न हाउ टू मेक चपाती, लेट्स ट्राई दिस टुडे, योर रिफ्लेक्शन शुड बी आई लर्न हाउ टू मेक चपाती. कैन यू राइट दिस आउट एंड एक्सप्लेन इट? You may give me the steps, pick up the dough, pick up the water, mix it, do it like that. But the feeling and the hands, how they process, it's very difficult to capture that in text or in context. Automatic, effortless, and often out of conscious control after a point. So your conscious takes charge. In procedural learning, repeated exposure leads to jump in performance until the skill becomes a practice that it is automatic. Learning a skill is totally different from learning a concept. And one crucial difference is the need for practice. Psychologists tell us that the only effective way to really master a procedural learning is to keep repeating it, which is probably the original aim of all the meaningless drill we do in school. This is a good place to make a general point about psychology and education. Psychologists doing research in procedural learning are investigating the ideal conditions for optimal learning. Let's try and see what this is, how this optimal learning happens. So I've actually changed the visual so that you'll see the page better. I hope you all can see the screen. I'm just doing some settings to improve the page. So we looked at this point, what is learning by doing, and then in procedural learning, repeated exposure leads to jump in performance. Now, what are we saying? That did meaningless drill do something in school? Psychologists doing research on procedural learning are investigating the ideal conditions for optimum learning, optimum, ideal, and underlying mechanisms of it, and so on. They report, for example, that the only way to learn a procedure is to have consistent practice and plenty of it. They always say practice makes a man or woman perfect. Now, how is a teacher supposed to respond to this? Should we flood our students with drill and practice? एक ड्रिल दे दो, छेद करते रहे दीवार में, क्या होगा? सारी दीवार क्रैक हो जाएगी. So much has been said about drill and deadening effect it has on learning that I do not wish to add anymore. Many teachers are aware of these two contradictory facts. Drill can be boring, and yet practice is the only way for students to master certain procedures. The problem with drill comes when we assume that it will substitute for understanding. रटना और समझना, ये दो अलग अलग कॉइन के साइड्स हैं. Concepts and procedures are two different things, both of which learning a procedure well cannot lead to better understanding of a concept. याद करना और concept समझना एक साथ नहीं होते. However, recent research is looking at ways in which each can improve the other, and there can be continuous back and forth process between procedural and conceptual learning. So we are trying to see कि concept सिखाना और procedure कैसे होना, ये कैसे इकट्ठा हो सकता है. It appears that the relationship between the two can actually be bidirectional, which means one can help the other.
Reflecting on the use of a procedure reinforces our understanding of the concept. We should ask students whether and why certain procedures work and other procedures are incorrect. For example, while adding large number, why is it important that we place them one under the other in a particular way? Another advantage of improved procedural knowledge is that when a skill has become automatic, mental resources and attention can be freed up for higher level reasoning. जब आप कार चलाते हैं, आप कार पे ब्लूटूथ पे फोन पे बात कर लेते हैं. देखा जाए तो फोन पे बात करना और कार चलाना वाजिब नहीं है, हो नहीं सकता. परंतु हम कार चलाने को अपनी स्किल में ऐसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं कि हम मल्टीटास्क कर पाते. So mental resources and attention can be freed. So you're freeing your mental resources up to a higher level of reasoning, planning, monitoring, associating, evaluating. We all know that understanding the meaning of text in a new language is extremely effortful and difficult until we have reached automacity, which means fluency in reading the words. Chapter 3 contains more on this phenomena along with examples. So practice is not itself a bad thing, but we must optimize. Involve a mixture of procedure in one session. Include small doses over a long period of time. Psychologists recommended not more than 20 minutes of a day are given skill. So आपके पास अगर 40 मिनट की क्लास होती है, आप इसको डिवाइड कीजिए कंटेंट में और प्रोसीजर में. दिस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट. इसमें से हम ले जा सकते हैं. आप 40 मिनट्स केवल पढ़ते ही मत जाइए, केवल उनको याद करने के लिए कंटेंट मत दो 40 मिनट्स के लिए. आप लेसन पर प्लान बनाते हैं, ये रूल नंबर 1 है. बी सप्लीमेंटेड विद रिफ्लेक्शन ऑन व्हाई सर्टेन प्रोसीजर्स वर्क, एंड देन दे शुड बी रिफ्लेक्शन. सो व्हेन वी इंसिस्ट दैट वी डू रीडिंग, reflection, and build relationships, that's exactly what they are saying. The phrase teaching for understanding is usually seen as restricting oneself to only conceptual learning. But if at the close of this section you see it as embracing both conceptual and procedural learning, it will be achieve my purpose. तो इसका मतलब अगर हम लर्निंग में कंसेप्चुअल और प्रोसीजरल लर्निंग ले सकते हैं, तब हमारा पर्पस एकदम अचीव हो जाएगा. And that's exactly what Kamla is saying, that this is the crucial part. You should be able to achieve both. Context dependent reasoning. In 1985, psychologist David Perkins wrote about schooling. So अब देखते हैं schooling की definition क्या है जो डेविड पर्किंस ने लिखी. One hopes that students will emerge from 12 or more years of study not just better able to read, write, reckon, or recall particular factors, but to think. I will repeat this. One hopes that students will emerge from 12 years. So let's take this. This is an interesting bit. क्योंकि 12 साल लोग स्कूल में रहते हैं. स्कूल में क्या करते हैं, क्यों जाते हैं स्कूल? तो ये पर्किंस ने रिसर्च की थी, डेविड पर्किंस ने. इसको हम कॉपी करते हैं और ये इंटरेस्टिंग रिसर्च है. इसको हम आपकी कॉन्वर्सेशन में लाते हैं और इसको हम आपकी कॉन्वर्सेशन में ब्रूइंग नॉलेज में जाते हैं. और ब्रूइंग नॉलेज में हम सबसे पहले तो एक हमारे पास वेटिंग में है कीर्ति मैम और वैशाली मैम. उनको हम एंटर करने को कहते हैं और फिर आपको ये डेफिनेशन दे देते हैं. कि आपके पास ब्रूइंग नॉलेज के व्हाट्सएप चैट में है. मैं रिपीट करता हूं. वन होप्स दैट स्टूडेंट्स विल इमर्ज फ्रॉम 12 or more years of study not just able to read, write, reckon or recall particular facts, but to think. कितनी सिंपल डेफिनेशन है स्कूलिंग की. It can't be simpler. It can't get simpler than this, the definition of schooling. I think this is a very important line. Perkins referred to this ability to think as informal reasoning or everyday reasoning, and lamented the fact that school pays little or no attention.
Now, this is interesting. School pays little or no attention. So let's see now what happens. सो आपका स्कूल क्या करता है? क्यों आपका स्कूल इस चीज में चूक जाता है? ये परेशानी क्यों आती है हमको? ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि हम बच्चों को सोचना नहीं सिखा पाते स्कूल में। हम उनको कंटेंट दे देते हैं, वो कंटेंट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और कंटेंट एब्जॉर्ब करना विच मीन नॉलेज प्राप्त करना, उसको वो समझते हैं एजुकेशन कंप्लीट होगी। और ये क्राइसिस है हमारे पास इस वक्त इंडिया में। Perkins referred to this ability to think as informal reasoning or everyday reasoning and lamented the fact that schools pay little attention or no attention to cultivating it. Informal reasoning differs from formal reasoning in that it does not involve strict deduction or calculation. When we are faced with a claim or situation, we often need to evaluate it after weighing evidence on both or several sides. For example, if you are asked, does violence on television and in computer game increase violence in society? ये सवाल है. Your answer cannot be simple yes or no. You would need to consider several strands of evidence, weighing all aspects carefully. Good informal reasoning would include more lines of argument, more objections to one's own point, and the ability to stick to the issue at hand. So on Saturday, when we are in the master class and we are doing productive failure, just reading the book and knowing what's in the book is not the answer. And that's why Saturday, when we meet, I consider it as a higher order thinking. On Saturday, we expect you to not just go by the content, but to test the hypothesis. Do the experiments in your free time, in your class time, in your structured time, in your non structured time, and come back with proof, evidence, assessment, and learning. तब जाके पता लगेगा कि आपने कुछ थिंकिंग की. But Perkins' research with high school students and college graduates alike showed that people's informal reasoning skills are surprisingly weak. Very few arguments are advanced to the various questions posed, and people gave even fewer objections to their own arguments. This part does not surprise me. This tendency for underexploration of an issue has been researched earlier. Students often assess only a part of all the relevant knowledge they have, and their reasoning falls far short of their intellectual capacity. Many will come up with one argument and rest content with that. This is sometimes called the problem of inert knowledge. So little knowledge is actually shallow knowledge is harmful. A rather apt term use. I think in addition to being generally shallow and narrow, thinking is often hasty or impulsive, fuzzy or imprecise. अब अपनी क्लास में चलिए, जो बच्चा सोचे बगैर जल्दी में जवाब देगा, आप सोचेंगे कि वो सीखने की कोशिश कर रहा है. बट सोचिए, क्या पता उसने पूरा कॉन्सेप्ट सुना ही ना हो, नॉलेज अप्लाई ना की हो. So for us to absorb, it takes a bit of time. And for you also to understand that how you can get to this absorption level, it takes time. As Perkins says, education does not encourage the ability to address open-ended issues. Schools' tasks focus on right answers, quick closure, and linear thinking. स्कूल टास्क यहाँ पे आते हैं. ये आ गया. अब देखते हैं आपके स्कूल टास्क में क्या होता है. ये भी पहुंच गया. आप सोचिए, स्कूल टास्क फोकसेस ऑन करेक्ट आंसर्स, क्विक क्लोजर एंड लीनियर थिंकिंग. ये मैंने एक कोट आपके लिए और छोड़ दिया. सोचना है इसके बारे में. Yet thinking about open issues is called for in many situations in the world. जब आप दुनिया में जाते हैं, ओपन इश्यूज आते हैं. जो आपकी बुक में लिखा है वो कभी नहीं आएगा. Many of our decisions concerning everything from money to health or to relationships could be improved by better reasoning. अगर हमारी सोच गहरी होगी. So for this chapter, the question is, can we learn to think better? I think this is an interesting part. For this chapter, the question is, can we learn to think better? This is most important.
and I think it's very, very crucial. क्या किसी के पास इसका जवाब है? I'll take a pause here. I think it's important for us to take a pause here. Can we learn to think better? My question to you people, you're happy to unmute. This is a meeting. We are happy to accept you say something or the other. Please unmute yourself and talk. That's the privilege of this Friday evening. Any reflection, any comment? Think about it. I'll pause. You can write in the chat box. What I'm saying, can we learn to think better? सवाल है आपके पास, क्या हम बेहतर सोचने के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं? सोचिए. You can write in the chat box, you can unmute, you can talk. I want you to talk because you're not here to listen to a monotone. फिर ब्रूइंग नॉलेज नहीं होगी, फिर तो आपका क्लासरूम जैसे ही हो जाएगा. मैंने लेसन पढ़ दिया, आपने सुन लिया, आप घर चले गए. हम वहां गए थे, हमने सुन लिया, क्लास अच्छी थी, कुछ सुन के आ गए, परंतु क्या सोचा? That is the question. And growing knowledge happens when we learn how to think. Any reflections? Yes, sir. I think that we can make ourselves think better. It's only that we need to understand that where our thinking is limited. Okay, and then we open up our minds to it. And I've been through many such phases in my life where I might have thought that, oh, well, my thought process and everything is just perfect. And then some situation arose and I was set thinking and my entire thought process changed and it changed my life for me. So yes, we can, but provided we have an open mind, we understand that we need to work in a thought on a thought process as well. So that is how I think Swati and Sakshi Khanna and all can also throw some light. मैं सही बोल रही हूँ गूगल मीनाक्षी, है मैं ना. इनसे पूछता हूं बड़े आसान तरीके से, क्या हम बेहतर सोचने का तरीका अपना सकते हैं? क्या हम सीख सकते हैं कि कैसे सोचा जाए? क्या क्या सोचना भी एक सीखने का तरीका है? रूबल, स्वाति, क्या हम सीख सकते हैं कि हम कैसे सोचें, कैसे अपने दिमाग को अप्लाई करें? रीना, कोई भी बोले, कोई दिक्कत नहीं है. बड़ी इंटरेस्टिंग मोड पे हम. कैन वी लर्न टू थिंक बेटर? आप स्कूल में बच्चों के साथ काम करते हैं, आपका तजुर्बा है, आप सोचते हो बच्चों की सोच बड़ी होती है, और कोई अगर आपके पास ऐसा एग्जाम्पल हो या ऐसा कोई सोच हो तो आप हमारे साथ शेयर कीजिए. और अगर आप लिखना चाहें इस वीकेंड, आप रिफ्लेक्शन इस पे भी कर सकते हैं. कैन वी लर्न टू थिंक बेटर? So I've already put in the chat box. The research shows that there are two possible approaches to this. The first approach is to teach thinking as a separate subject, and several programs of this kind have been developed and tested for school age children. The programs all do two things: make students aware of the process of their thinking, strengths, weaknesses, possible pitfalls, and reorganize their thinking with the help of strategies. The highly successful critical thinking course created by Matthew Lipman is a good example. But one problem is that courses like this take up precious school time, typically 2 to 3 periods a week over 8 weeks or so. Where is the space in our Indian curriculum for an extra subject? Another problem is that the courses avoid dealing with subject matter information and prefer to stick to abstract problems or puzzles. This may not give students the skill, situated thinking, which is important in developing any domain knowledge and expertise.
So let's look at an example of reciprocal teaching. The reciprocal teaching method, developed and tested in the 1980s by psychologist Anne Brown and her colleagues, is a way to make our classroom a collaborative learning experience where students can take charge of their own learning. It uses dialogue among students and a teacher as a means to understanding challenging text material and in the process improve the students' metacognitive skills. मेटाकॉग्निशन क्या होता है? सोचने का तरीका के बारे में सोचना. एक कॉग्निशन होता है, एक मेटाकॉग्निशन होता है. कॉग्निशन होता है केवल सोचना और दिमाग को काम पे लगाना, और मेटाकॉग्निशन होता है वो तरीका जो दिमाग को सोचने और काम पे लगाने का तरीका बने. The text can be in any subject and must be divided into smaller segments, usually paragraphs. So आप bite size learning करें, छोटा छोटा text बांट दें और बच्चों को दे दें. The method has been used with 6 to 17 students in a group. But if you have a large class, don't worry, don't despair. You can use the ideas behind reciprocal teaching with small groups of students and minimal teacher support. Just divide the class into several groups of 6 to 8 students while you go around giving guidance and help where necessary. Initially, you as a teacher will have to demonstrate all the four skills: summarization, clarification, question generation, and prediction. Gradually, your students will get the hang of it and be able to continue in their own. Everybody reads a paragraph together and then one student summarizes it in her own words. The next student clarifies any part of the difficult to understand or possible inconsistencies with the help of the group. The third student asks the question based on the text. This could be a question, the answer of which can be found in the paragraph itself, or it could be a question sparked off by reading. Another student predicts the content of the next paragraph based on the text so far and his own general knowledge on the topic. The group now moves on to the next segment of the text, and the process repeats itself with another set of 4 students. So कैसे इन्होंने कड़ी बनाई, कुछ पढ़ा, उसके बारे में सोचा और फिर आगे पढ़ा. On paper, the method almost sounds too simple to be effective, but just try it. It quickly changes the depth at which students are reading text and the level of understanding they gain. Gradually, this method of reading difficult text boxes internalizes in the students so that more and more they read to learn, they re-able to monitor their own understanding of the material. The second approach solves both these problems in one stroke, and that is to teach better thinking through the subjects. Perkins calls this infusion because the hope is that these skills will spread to thinking in general. The best example of the approach in reciprocal teaching, developed in the 1980s by psychologist Anne Brown and described in detail in Box 2. The method can be used for material in any subject area, and it encourages an awareness of one's own understanding of the material. This awareness goes by a nice name, metacognition. So let us see what is metacognition. So मैं आपको मेटाकॉग्निशन के बारे में कह रहा था ना, सो मैं अब आपको मेटाकॉग्निशन की डिटेल भी दे देता हूँ. ये आपके चैट बॉक्स में आ गई है. In simple terms, it is the ability to know what one knows, how well one knows, and what will help to improve one's knowledge. You may be surprised to learn that not many students possess this ability. People in general tend to over or underestimate. Do not use appropriate strategies to learn. In Chapter 4 on child development, you will read more about the development of the metacognition ability through childhood. Metacognition is certainly an important part of informal reasoning. Infusion may also work to the extent that increased knowledge per se improves our reasoning ability. Some psychologists would agree the extreme position that good reasoning is nothing
but a well organized knowledge base. Would a person who knows something about sociology, childhood, and correlation and causation reason better on the question about TV violence than a person who does not know these things? Quite possibly. The idea is that knowledge, both conceptual and procedural, is developed in various domains: mathematics, science, language, history, and so on. The knowledge and skills develop generalize across domains and eventually can be used in new reasoning situations. In other words, by teaching a subject in such a way, the reasoning skills are developed in context. This is interesting. So I'll just mark this. I'm not able to mark it here. अब आ जाएगा. Let me highlight this and I'll give it to you. By teaching our subjects in such a way that reasoning skills are developed in context, which means reasoning skills को context में develop किया जाता है. We ensure that our students gain more and better organized knowledge, which in turn will improve their general reasoning abilities. In chapter 7 on intelligence, we will read more about this idea because general reasoning ability is one way of defining intelligence. So this is important. We will just take it from here to here. I've shared this with you. Why I'm sharing these nuggets or these bullets with you? Because I want you to think, and that's what brewing knowledge is all about. Just to make you think. We don't want to burden you with assignments or work like that. We want only you to think. My own solution would be to teach subjects with conceptual and procedural understanding in mind. Use reciprocal teaching methods whenever possible, and have occasional conversations with my students about the nature of learning, understanding, and remembering. If you can also slot in a single period a week for discussions on open ended questions, this will help them practice informal reasoning skills as well. In these sessions, try to make students aware of the pitfalls of poor thinking, narrowness, shallowness, imprecision, tangential talking, जब आपस में क्रॉस टॉक करें, and let them come up with more themselves. In conclusion, it happens what we underestimate our students' capacities to learn. Some teachers do this all the time, and all teachers do this some of the time. Thus, it is good to keep in mind the complex and sophisticated nature of learning and go with the grain of human principles. Closely related to learning is the phenomena of human memory, which is covered in the next chapter. In fact, the two are the same thing. To learn is to remember. In chapter 3, therefore, we will revisit the idea of concepts and procedures with slightly different terminology, besides encountering other quite different aspects of learning. So, this is a very interesting chapter. What is learning? और अब अगला चैप्टर है वो है ह्यूमन मेमोरी पे. तो बहुत सारे रेफरेंसेस हैं अगर आप डीपर लर्निंग में जाना चाहें. सो अगला चैप्टर ह्यूमन मेमोरी पे है. मनीषा जी, आपने बुकमार्क लगाया था? ये बुकमार्क ह्यूमन मेमोरी पहले ही लगा हुआ था यहाँ पे. चलो, इसका मतलब हमारा टारगेट यहाँ तक था. अब अगला जो सैटरडे है मनीषा जी, आज है फ्राइडे 25 तारीख. नेक्स्ट फ्राइडे है 1 अगस्त. 1 अगस्त को आप अगर मुझे थोड़ा सा रहम देंगे तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँगा. 1 अगस्त को हमारी अवार्ड सेरेमनी है जयपुर में, और उस दिन हम क्या कर रहे हैं, कोई बताएगा? Anyone who can tell us what's happening on 1 August? The prize, sir. Absolutely. So it's the day for prize giving of the Snehlata Prize, which is the prize for someone who has contributed phenomenally into helping children read. And we have recently announced that person. I'm sure you all must have come across
We are meeting Swati Roy, and this is happening in Jaipur. So please excuse us. So I put the new date with the bookmark. Is that clear? किसी को कोई सवाल पूछना है लर्निंग के बारे में? आई एम हैप्पी टू आंसर. I know some of us are waiting for the next story. I'm happy to read that. I'll read it in a minute. But if you want to ask me something, I'm more than happy to answer any question. Manisha, are we reading about the man and the tattoo? Manisha Khanna? What is the chapter today? Anyone? What we are reading in Rumi stories, the story? Does anyone remember what was the story listed for today? आज की कहानी क्या है जो लिस्टेड है? कोई बता पाएगा हमें? आज के प्रोग्राम में कहानी होगी. Meenakshi, can you read from your WhatsApp what is the story we have to read today? The story here today is the man who wanted a tattoo. एब्सोल्युटली. तो चलिए हम रूमी की कहानी सुनने. आपने टैटू देखा होगा. टैटू आप अपने शरीर पे बनवाते हैं. द मैन हु वांटेड अ टैटू. There is a town called Kazvin in central Persia where it was customary for wrestlers to tattoo parts of their bodies. One day, a man who was not in fact a wrestler, but who wished to pretend that he was brave and mighty, went to the tattoo artist who worked in the public bathhouse. He asked the artist to create a beautiful design on his arm that befitted his courage. What kind of design would you prefer? Asked the artist. A fierce lion. What else? एक खूंखार शेर बना दो मेरे ऊपर. My zodiac sign is the mighty Leo. मैं लियो हूँ. लियो आपके zodiac sign होते हैं ना, टॉरस, जेमिनी, स्कॉर्पियो. सो वो लियो है और अपने ऊपर एक लायन का टैटू बनवाना चाहता है. सो मेक श्योर यू यूज द डार्केस्ट ब्लू you ever tattooed on anyone, said the man arrogantly. The tattoo artist took out his inks and pins and set to work. It only took a couple of piercing before the man could bear the burning pain of the needle, and he snapped. Which part of the lion are you tattooing? I have started with the tail, sir. Leave it. Leave the tail alone and start elsewhere, agonized the fake wrestler. अब उसमें दम तो था नहीं, पर वो अपने आप को कागजी पहलवान बनवा रहा था. The artist went back to work, but as soon as he pierced the man's arm again, the man began to scream in the pain. Which part are you painting now? The lion's ear, reported the artist. Leave it, leave the ear alone, and start elsewhere, screeched the man, tears in his eyes. The artist huffed and puffed, but didn't say a word. Going back to his work, once again, the fake wrestler began to scream. What are you doing? Which part are you tattooing now? The belly of the lion, sir, said the artist with disdain. Disdain? Matlab, and he lost it. Well, he was uninterested. Oh my god, this is unbelievable. Leave the belly alone. It's too much, too painful, the man whined, unable to bear the burning pain. Why should a beautiful lion belly be at all? The tattoo artist was at his wit's end. अब जो artist था बस घबरा गया, वो थक गया. Totally exasperated, he threw his tools to the ground and stepped away from his client. What kind of lion tattoo doesn't have a tail, an ear, or belly? God has not created such a lion. Lion ऐसा God ने कोई बनाया नहीं जिसका tail भी ना हो, belly भी ना हो. He snapped, Get out of my sight and don't ever dare show your face at my parlor again. Before the fake wrestler could even begin to complain, the tattoo artist grabbed him by the scruff of the neck and threw him out of the bathhouse
into the cold winter air outside. कोई सोच किसी के माइंड में कुछ आया? Anything you take away from this? एक तो ये मेरे हिसाब से सर कुछ करने के पहले उसको थोड़ा सोच लेना चाहिए कि उसका मतलब हमारे ऊपर इफेक्ट क्या होगा, अंजाम क्या होगा? हाँ। अंजाम क्या होगा। क्योंकि जब वो पता रहेगा तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। अगर नहीं जानेंगे पहले से तो कैसे कर पाएंगे उस काम को। तो उसका पेन कितना होगा, एफर्ट कितना होगा, ये सब चीज़ तो हमें पता होना ही चाहिए, है ना। और दूसरा एक होता है कि लाइक कोई भी चीज पूरी जैसे इसने बोला आर्टिस्ट ने बोला कि बिना तेल के, बिना कान के, बिना पेट का कोई हो सकता है क्या? जब कोई हो नहीं सकता है उस तरह का, तो मतलब कोई भी चीज अपने पूर्ण रूप में ही मायने रखता है, अदरवाइज कोई मतलब नहीं रखता है। तो दैट इज मेरे ख्याल से ये दो चीज बहुत बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट। मीनाक्षी। मीनाक्षी, अगर आप आज को कनेक्ट करेंगे दोनों किताबों को, जी। दोनों किताबें सोच के ऊपर है। आपने अगर कनेक्शन देखा है इनमें, जी। अगर आप वंदना मुकुंदया की किताब में देखें, वो कहते हैं आपको सोचने का तरीका आना चाहिए। जी। ठीक है, अब यहाँ सोचने का तरीका तो उसके पास था नहीं। हाँ नहीं उसने है। कहा बस मेरे पर टैटू बना दो तो मैं खूंखार लगूंगा जब लोग मेरे पर टैटू देखेंगे। जी। उसने ये तो सोचा नहीं कि रेसलर्स कितनी मेहनत करते हैं और कैसे अपने आप को कंडीशन करते हैं, कैसे अपने आप को स्ट्रेंथन करते हैं। जी। तो वो अपनी कागजी पहलवानी के नशे में आया, मैं भी रेसलर बन जाऊंगा। जी। तो इसलिए कुछ भी करने के लिए आपको प्रयत्न करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। और पेशेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये पेशेंस भी होती इस आदमी में, तो उसमें सहन शक्ति होती। और जी। जितनी सहन शक्ति टीचर बनने के लिए चाहिए, शायद ही किसी और प्रोफेशन में नहीं चाहिए। जी। तो ये बहुत टीचर इंपॉर्टेंट बनने चीज है। जी। टीचर बनने के लिए बहुत सहन शक्ति चाहिए। बहुत सहन सहन शक्ति शक्ति चाहिए। है ना, एम्पैथी लोगों के लिए, प्यार लोगों के लिए। आई मीन ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सबके लिए प्यार होना पड़ेगा। अगर टीचर आप बनते हो तो आपको बच्चे के लिए तो होना ही पड़ेगा, उसके परिवार वालों के लिए भी होना पड़ेगा, है ना, कि भाई वो किस चीज़ से गुजर रहे हैं। तभी तो आप बच्चे को समझ पाएंगे और उसको एक्चुअल सपोर्ट दे पाएंगे, तभी तो बॉन्डिंग बनता है। बिना उसके बॉन्डिंग नहीं बनता है। आपको बच्चे के चेहरे देख कर समझ लेना है कि हाँ उसको कोई तकलीफ है। और उस तकलीफ का मतलब आपको जज गेस भी कर लेना कि क्या है। ऑफ कोर्स पहले बार बच्चे को आप देखेंगे आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये बॉन्डिंग बन जाता है, आपको हर चीज़ पता लग जाता है। तो ये एक चीज़ होता है। थैंक यू ये- मीनाक्षी। और मीनाक्षी, मैं अक्सर ये एग्जाम्पल देता हूँ अपनी लाइफ में, जैसे हम काम करते हैं। मैं कहता हूँ कि साल में हर एक टीचर को अपने बच्चे के घर, क्लास में एक बच्चे घर में एक बार जाना चाहिए। ये छोटा सा एक मेरा तजुर्बा है, बहुत अच्छा काम करता है। कि जी। जब टीचर पूरी परिस्थिति जानेगा, तभी टीचर समझेगा कि लर्निंग टू लर्न कैसे हो सकता है, तभी टीचर समझेगा कि फेक कौन है और असली कौन है। और फेक और असली में सर एक मेरा लाइफ टाइम का एक ये भी है, छोटा सा चीज़ जी था। जी। लोग कहते थे कि लाइफ में इफ़ यू वांट टू बी हैप्पी यू नीड टू बी ग्रेटफुल, ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, शुक्रगुजार होना चाहिए। और बस मेरी आदत है हर चीज़ में थैंक यू बोलने का, हर चीज़ में सॉरी बोल देने का, ये करने का। तो मुझे लगता था मैं तो बड़ी ग्रेटफुल हूँ, ग्रेटफुलनेस और क्या करूँगी मैं। फिर ये रोंडा ब्रायन का एक किताब है मैजिक, उसमें एक जगह है जहाँ पे वो सीक्रेट भी है बोलते उसकी हैं। किताब, सीक्रेट भी बहुत अच्छी किताब है हाँ रोना। सीक्रेट भी बहुत अच्छी किताब है, लेकिन ये दूसरा है सीक्रेट तो वो दूसरे तरह से, ये तो दे मेक यू प्रैक्टिस, मैजिक दे मेक यू प्रैक्टिस। सो जी जी। उसमें था एक चैप्टर जहाँ पे आपको बैठ के आपके लाइफ में हर इंसिडेंट, हर चीज़ जो आपको मिला उसके लिए शुक्रिया करना था। और वो जब जब वो मैं करने बैठी तब मुझे ग्रेटफुलनेस का असली मीनिंग पता लगा। मतलब तो ये जो होता है, जो हम लोगों को कई बार लगता है कि हमें ये पता है, हमें वो पता है, असल में कई बार हमें पता भी नहीं होता है। तो ये एक्सपीरियंस मैं स्पेशली इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि कई बार हम लोगों को लगता है, यहाँ टीचर्स हैं, सब कोई को ये है कि मतलब
हमें लगता है कि हमें सब चीज़ पता है, हम हर तरह से पूर्ण है, लेकिन होता क्या है, लाइफ के एक्सपीरियंसेस आपको सिखा देता है कि नहीं, आपको और भी बहुत कुछ सीखना है, और सीखने के स्टेप्स बहुत सारे हो सकते हैं, एंडलेस स्टेप्स हो सकते हैं। तो जी दैट इज़ वन थिंग दैट, मतलब ये हम लोगों को समझना है एज टीचर्स। ये नहीं हो सकता कि हम एज अ टीचर ये सोच ले कि हमें जो आता है वो काफ़ी है, हमेशा और ज़्यादा और ज़्यादा। इसके लिए ये जो आप किताबें जो पढ़वाते हैं हमें, वो बहुत अच्छा हो जाता है, इट्स वेरी गुड। तो मतलब क्योंकि क्या होता है, जो कि हम बुक शॉप में जाते जो किताबें उठाते हैं, वो ज़रूरी नहीं कि ये सब किताबें हम उठाएं पढ़ने के लिए, वो तो हम अपने हिसाब से उठा लेते हैं। लेकिन ये सब किताब जो है कि जो हमें नहीं, हो सकता हम सोचे भी नहीं पढ़ने का, यहाँ आके फिर हम पढ़ते हैं। सो चाहे वो बैक बेंचर टीचर हो, चाहे सीक्रेट लाइफ ऑफ एनिमल्स हो, चाहे जो भी किताब है ना। तो मैं तो एक दो का एक नाम ले रही हूँ, नहीं तो कितना का मैं ले लूँगी नाम यहाँ पे। तो इसीलिए, बट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, एंड आई मीन आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू अटेंडिंग ऑल योर क्लासेस। सारे आपके क्लासेस को मैं अटेंड इसलिए भी करना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं कि हर किताब मैं खरीद लूँ, लेकिन कम से कम यहाँ पे जी। मैं सुन तो रही हूँ और सीख तो रही हूँ और विद इन मेरा लाइफ ऑफ। रियल लाइफ की प्रोसीजरल नॉलेज है, आप देखिए, ये कंटेक्सचुअल नहीं है, ये प्रोसीजरल नॉलेज है, बिकॉज आप तजुर्बे से सीख रहे हैं और वो रियल लर्निंग होती है। सो गॉड ब्लेस एवरीवन, प्लीज कीप अप्लाइंग दीज थॉट्स टू योर क्लास, मेक नोट्स। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि आप एक नोटबुक जरूर रखिए शाम को, और उसमें कुछ भी लिख दीजिए जो आपके माइंड में आया हो, जो आपके साथ उस दिन हुआ हो। मैं आपको एक छोटा सा ये जर्नल लिखने का जो एक्सरसाइज बता रहा हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ ये आपकी जिंदगी बदल देगी। केवल इतना करें शाम को कि आज मैंने क्या एक थॉट प्रोवोकिंग चीज लिखनी है, कुछ भी हो सकता है, उसे नोट कीजिए। बस आज इस सीक्रेट के साथ आपसे अलविदा, आपके शुक्रगुजार। और अब हम आपको मिलेंगे 8 ऑफ अगस्त को। मैं माफी चाहता हूँ, 1 अगस्त को आपको नहीं मिल सकते, अब हम मिलेंगे आपको 8 अगस्त को। टिल देन, कीप ब्रूइंग नॉलेज, बाय बाय एंड गुड लेट इवनिंग।